अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान और आप सब बहन भाइयों को, दोस्तों को, फ्रेंड को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। क्योंकि हम वीडियो नहीं बना सके इसलिए कि थोड़ा सी मसरूफियात चल रही थी, तो मैंने बोला नहीं, हमारे जो फ़ैन हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे, तो इस वजह। कैसी गुजरी आपकी ईद? मेरी तो बहुत 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 अच्छी गुजरी है, पर घर पे गुजरी है। ज़्यादातर ईद घर पे गुजरती है या फिर रिश्तेदारों के घरों में इंसान जाता है और इस तरह से ईद गुजर जाती है। खैर, फिर आपकी कैसी गुजरी? मेरी भी घर पे गुजरी। घर पे गुजरी है? अपने घर पे गुजरी है। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है इटालियन एम्बेसडर ईट ओनली इंडियन फूड। एक लड़की है, इंडिया में रहती है, ये इंडिया ही में रहती है, इटली की है, यूरोपियन है। इटली के एम्बेसडर भी होते हैं हर कंट्री में, हर मुल्क में हर मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, ऑफिस होता है, दफ्तर होते हैं, एम्बेसी होती है। जैसे सऊदी एम्बेसी है, सऊदी अरब वालों की एम्बेसी हमारे यहाँ है, इस तरह चाइना की भी है। तो इंडिया में भी इंडियन एम्बेसी है, इटली की एम्बेसी है जी। तो उन्होंने अपने एम्बेसडर को इंडिया घुमाया है। देखते हैं क्या क्या घूम रहा है, क्या खा रहा है बंदा। बहुत वायरल हुई है ये वीडियो। हम थोड़ा लेट रिएक्शन दे रहे हैं, 7 दिन पुरानी वीडियो है। 7 दिन पुरानी वीडियो है कि स्टार्ट करते हैं। हम ज़रूर बनाते 7 दिन पहले ना, तो हम थोड़ा लेट हो गए। तो देखते हैं। ईद की छुट्टियाँ बढ़ गई। इंटरेस्टिंग वीडियो तो देखते हैं। Cielo Baia. The ambassador of Italy in India and Nepal, Vincenzo De Luca. Melody. The meme is all over the internet. They ask me when your prime minister come back here. What is one Hindi word that you use a lot? Dhanyavad, fir milenge. I actually love taking the tuk-tuk, so It's really one of the most exciting experience to travel in the city in India. This is a small dosa. Your favorite Bollywood star? Amitabh Bachchan, मुझे नींबू पानी बहुत पसंद है. Julia here. Today is a very special day because we have the pleasure to have the ambassador of Italy in India and Nepal, Vincenzo De Luca. Vincenzo, it's nice seeing you. My pleasure. Today we're gonna go around Delhi and have street food, and I'm gonna ask him some questions because 4.5 years of mandate are coming to an end. Let's go and have chai. Yeah. What is a morning without starting with chai? Let's go. Because it's gonna be about street food. First question, ambassador, your favorite street food in India? Samosa, definitely. He actually asked me like, are we not gonna get samosa? So we sorted that out, but yeah, samosa. Like everyone, when you have a chai, you chit chat, you ask fun questions. So what is your favorite Bollywood star? I would say Amitabh Bachchan. He's an historical star from Bollywood. But I like also the ancient Indian movie director that is Satyajit Ray from Kolkata. And I like also Mira Nair and the last production of Slumdog Billionaire, whose script was made by the former Indian diplomat Vikas Swarup, that is a very good friend of mine. Oh wow! And what is one Hindi word that you use a lot throughout your daily life here in India? Dhanyavad. Dhanyavad. And what do you think is one dish in India that resembles a dish in Italy? When I have street food in India, I remember when I was in Italy. Pane e panelle, pizza, pizza fritta, croquet, arancini, all fried. Yes, like all here. fried. Samosa is fried, pane e panelle is fried, That's true. pizza is fried, in Naples at least. It's time to try another street food, actually the favorite of the ambassador. We decided to take the tuk-tuk because why not? We are here in Delhi, let's take it. So let's go. Cielo Baia. I actually personally love taking the tuk-tuk because there is like a nice breeze coming. Exactly. So it's really one of beautiful. the most exciting experience when you have to travel in the city in India. Of course, Exactly. in the city. In the meantime, we're gonna ask the ambassador some questions because you might not know that the tuk-tuk has some relationship with Italy. Yes, we have some Italian tuk-tuk, the Piaggio electric tuk-tuk. Piaggio produced here in India, make in India by Italy. And they are based out of Pune, right? In Pune, Maharashtra. What is like one story that has connected you so much here in India and Nepal? There was a great challenge when we experienced COVID in India and Nepal. And on that occasion, we experienced
great solidarity. And we experienced also a great level of collaboration at the level of the Ministry of Health, also launching some research project to prevent the pandemic. Yeah, So it was an exactly. experience of friendship, of very close collaboration, and I cannot forget that period. Yeah, of course. So we are heading to get a samosa for Jens Bassel. That's his favorite street food, so we should totally get It's it. definitely my favorite street food. So how are you gonna do it With now that you- potato, green pea, fried of course, and Yeah. some spice. Yes, Because a little- without spice there is no Indian food. And there is also not life, right? And no life. Exactly. Dhanyavad, फिर मिलेंगे. Dhanyavad. So we are at the Tamil Nadu Yes. house. We're gonna make the ambassador order in India. Dosa or samosa or nimbu pani. This is your favorite street food, so I really want you to try it and tell us what you think. Best way to start a morning here in Delhi. And it has this like little kick of spice at the end. Exactly. What is your experience with spicy food here? I like a lot spicy food. When the food is well prepared, you can at the same time taste the spice and taste the ingredient. This is the case for samosa. Oh, wow. This is what, 1 meter? This is a small dosa for starting very light breakfast or continue the breakfast. You see here in India, we eat not so much, just a small dosa after a very good samosa. I think this is one of the commonalities that we have, right? Exactly. When you go to a family lunch or like a family dinner in Italy, there is no way you can leave the table without having a full stomach, like a full tummy, right? Absolutely. And that's the same here. Like, I think food, equally in Italy and in India, food is love. So the more they love you, the more food. Because we are both generous people. That's we want true. to share food. In Naples, you have a big pizza called ruota di carretto, that is a char wheel that go beyond dish, like this dosa. So let's try the dosa. Is at the same time crispy but also soft. Very Yes, good. exactly. With this. Yes. How is it? Buonissima, buonissima. Buonissima. Italy and India have one thing in common. Those are like hand gestures. What would be one hand gesture from Italy that you would like to show the audience that is watching this video that you think they should learn? In southern Italy, when you do like that, means what do you want? But in the Arab world, this same gesture means please wait. And in India, we know that when you do like that, it's okay. Yes. But if you do like that in Italy, means maybe no. That's actually true. What are other commonalities that the two cultures have? Because, you know, I'm married to Shrey, who is behind the camera, and a lot of people ask me, have you had any cultural shock or any cultural surprises? And I always say no. I have a feeling that the two countries are so similar culturally. But what is There your is a high degree of empathy, natural empathy in India and in Italy. The important role of family in the organization, but also another important communality between Italy and India is creativity, because we are two creative people. If you see the creativity of the ancient India and the creativity of the Roman period, today fashion and design in India and Italy are outstanding and very well known all over the world. And linked with the creativity, there is a sense of entrepreneurship, because in Italy we have 4,500,000 enterprises. That means one enterprise out of 11 Italians. And in India also we have millions of companies, startup. This is another similarities in the economic community between Italy and India. Yeah. So food, culture, enterprise, family, innovation, creativity. This is the best drink in India. Nimbu pani. Nimbu means lemon, pani means water. As simple as that. Mujhe nimbu pani bahut pasand hai. Ooh! I think what maybe people also do not know here in India is that we do use chilies too. Specifically the chilies from Calabria. Chilies from Calabria that is spicy and is very good. And we do chili oil, so sometimes we put the chili oil on top of the pasta or the pizza. Exactly, exactly. So that's another thing that we have in common. Wow. This is art. Cheers. Yes! Namaste, namaste. Who is preparing dosa? Really good dosa. Top dosa. Congratulations. Dhanyavad everybody. Good job, thank you. Dosa, bahut acha. Ambassador, this is a really hot moment and the bond between the two countries, Italy and India, is becoming stronger and stronger. What is your view on this and what do you think the future looks like? You are right. We are now reached the top level of our relation between Italy and India. We launched the so-called strategic partnership last year
with two summits between Prime Minister Modi and Prime Minister Meloni here in Delhi. And also we have signed a lot of agreement in terms of defense, space, mobility. Mobility is very important because now we'll have more and more students and workers from India to Italy. Italy with India signed the first mobility agreement all over the world. Wow. This is the importance of this relationship. So, Melody, the meme is all over the internet. Whenever I go in India, they ask me when your Prime Minister come back here. Because there was two very successful meetings last year in March and in September, and on the social media there was a hashtag Melody, Meloni plus Modi. Yes, I Successful, think I would say. exactly. Extreme popularity. So we are really waiting for Giorgio to come back again. The tradition that I think could become very popular in India is caffè sospeso. In Naples, you go to a bar, many people do this. They pay their own coffee and they pay another coffee for whoever come after. No matter young, old, rich, poor, caffè sospeso. Coffee is paid by me for the next client. Hello, good morning. One coffee and un caffè sospeso. One coffee for the next client. Thank you. After 4.5 years, what is one fond memory that you have? India enters my heart in terms of human relation, friendship, in terms of cultural experience, in terms of diversity, in terms of food, in terms of diversity of landscape all over India, from the mountain Himalaya up to Kerala and the tropical states in the southern India. What is one thing that you're gonna miss about India? I miss this humanity. I miss this capacity and this attitude from the Indian side as well as from the Italian side, because in this we are quite similar, to become friends, to attach great importance to the human dimension, the relations with people and friends, and all the experience we have always had very great hospitality all over India. It's time to end our video, Ambassador. Unfortunately. Yes, it was a pleasure to have you. What would be one thing you would like to take with you, and how would you like to close this video? Since my departure will be in the coming months, I can tell you that I will keep so many friends here in India forever, and I will come back here, and I will hope to receive in Italy my friends from India. Yes, absolutely. I'm pretty sure that India will always have a great memory of you, and they will always be happy to welcome you back. Thanks again for Dhanyavad. the time. Dhanyavad. Grazie mille. Hope you like this Grazie. video. As always, click the like button, subscribe to the channel, and we'll see you next time. Bye. ये थे इटली के एम्बेसडर, और यही इटली की एक लड़की है और यहीं पर इंडिया में रहती है, तो इसने आज इनको इंडिया दिखाया और बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो लोगों ने पसंद की है, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई है। इन्हें इंडिया के खाने, इंडिया की स्ट्रीट फूड, इंडिया का कल्चर, इंडिया की सोच, इंडिया की ह्यूमैनिटी, इंसानियत, सारी चीज़ें इनको पसंद है और बहुत तारीफ़ कर रहे थे इंडिया की और बहुत अच्छा बोल रहे थे। और मतलब एक लफ्ज़ इन्होंने जो है वो बड़ा पक्का सीख लिया है। कौन सा वाला? धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते, धन्यवाद, नमस्ते। और अच्छा, ये जो हाथ यूँ करते जब तक हैं, इनको दो चीज़ नहीं आएगी तो लोगों को कैसे वो जाके क्या बोलेंगे? शुक्रिया। सीधा खाता, हाँ ये तो ज़रूरी है ना, आप कुछ खाए तो करो, शुक्रिया तो कह सकते हैं, धन्यवाद कह सकते हैं, वरना खामोश होकर खड़ा रहना पड़ेगा, बोले देखो बंदा बात नहीं इंग्लिश में बोलेंगे थैंक यू। थैंक यू। लेकिन किसी की ज़बान में, उन्हीं की ज़बान में अगर कोई लफ्ज़ बोला जाता है तो उनको खुशी होती है। खुशी भी होती है, इंसान पता चला कि हाँ वो कुछ कह रहा है। हाँ, तो इस और वजह दूसरी से- चीज़ ये है कि मतलब इंडिया जो है, मैं कहता हूँ जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं उनको यहाँ का कल्चर वैसे ही बहुत पसंद आता है। बिल्कुल। यहाँ का रस्म व रवाज, यहाँ की तहज़ीब, यहाँ के कपड़े। अच्छा, वहाँ पर इटली में ना, इटली का पिज़्ज़ा बड़ा मशहूर है। मतलब ओह। हाँ, यूरोप कंट्री में पिज़्ज़ा वहाँ से आया है। अच्छा। पिज़्ज़ा हमारे एशिया, इंडिया, पाकिस्तान का नहीं है, हम लोगों ने यूरोप से उठाया, समझो। ओह। यहाँ वो मशहूर है, बहुत पिज़्ज़ा लोग खाते हैं। यहाँ की अलग डिशें हैं, यहाँ की जैसे इंडिया की डोसा है। हाँ, इंडिया में अलग है, यहाँ पर पाकिस्तान में अलग है, यूके में अलग है, जापान में अलग है, हर इलाके का अलग बहुत सारी कल्चर है। डिशें हैं, कल्चर अलग हाँ, अलग है। चाइनीज़ जैसे डिशें हैं। चाइनीज डिशें हैं, यहाँ पर भी लोग होते हैं कि भाई हमें चाइनीज़ खानी है, कोई कहते हैं हमें ये खानी है, कोई बर्गर, जिंगर, ये भी कहाँ था ये अच्छा, जिंगर हाँ, होगा, हाँ, ये ये तो भी- सारी ये भी चीज़ें यूरोप सब से आया। बाहर से। अच्छा, यहाँ ये जो डोसा था, आपने इतना बड़ा डोसा देखा कभी? इतना बड़ा नहीं देखा, लेकिन अगर ये वीडियो के लिए खास तौर पर उन्होंने बनवाया है कि नहीं, ताकि इस- लोग देखें। नहीं, वीडियो के लिए भी चौंक बनाया जाते होगा देख के। और इस रेस्टोरेंट में बनता भी होगा, क्योंकि लोग आते साइज हैं के हिसाब से, उनके लोगों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। क्योंकि दो आपकी लोग मर्जी हैं, है, हाँ। आपकी मर्जी, आप छोटा सा डोसा बनवाएं,
या पूरी हाँ, फैमिली के इन्होंने लिए। बोला वो बड़ा ही बना दो ताकि तो अच्छा लगे, लोग अच्छा लगे, देखें। हाँ, तो ये इनकी स्पेशलिटी होगी। लेकिन इतना बड़ा डोसा वाकई नहीं देखा। और डोसा जो है कराची में भी मिलने लग गया है, ओह, हैदराबाद में नहीं बाकायदा मैंने है। तो कभी नहीं खाई है, ये तो कब खाएंगे? क्योंकि इसमें ना ये हर किस्म की चटनी वगैरह अच्छा इन्होंने लगता है। दिया हुआ है ना, मतलब है कि और वो भूसा क्या आप बोल रहे हैं आप, चावल की आटे से बनता या है। चावल के आटे से है, मतलब हर इस जिसमें आपको जायका लग रहा है अब उसमें से लगा लगा कर खाओ। हर किस्म की चटनी है, दाल है, यानी भी जो है। चटनी आपको पसंद है हर आप वो इतनी सारी इस्तेमाल। डिश, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने नहीं खाई कभी। डोसा नहीं खाया? नहीं नहीं, इतनी सारी आइटम के साथ नहीं खाई मैंने। खाना है? हाँ कब? मैं ट्राई करूँगी, और जब इतने ये जाके खा सकते हैं, कि मैं क्यों नहीं खा सकती भाई। तो वो तो खा सकते हो, तो इंडिया में मौजूद है। इंडिया में मौजूद है कराची में हर हाँ। जगह नहीं मिलता ना। नहीं मिलता भाई, इंडिया जाएंगे हम। चलो ये भी और सही क्या। है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त हम वीडियो इंडिया थी। वालों के लिए वीडियो रिक्शे बनाते में- हैं, रिक्शे और में- लोग इतनी खुशी खुशी देखते हैं, हमारे फैन हैं, इंशाल्लाह हाँ। ताला जाएंगे, हमारा हमें भी इज्जत देंगे, वो नहीं रिस्पेक्ट करेंगे हमारे लिए। मेहमान को तो के लिए भगवान ज़रूर। समझते हैं। हम्म। मेहमान की रिस्पेक्ट ऐसी है कि हमारी नज़र में ना हर कोई एक जैसा है, देखिए सब हिंदू हैं या कोई मुस्लिम है या सब कोई इंसान है। इंसान है हमारी नज़र में। मैं तो सबसे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ। अब सबका अलग अलग कल्चर है, अब अलग अलग है कुदरती तौर पे, मतलब है कि उनकी फैमिली, उनके ख़ानदान ही शुरू से उनको ऐसी तरबियत दी, तो वो हमारी गलती नहीं है ना। जिसको शौक़ है, इंडिया है, उनका क्या है, जैसे कि वो ये तो देखें जहाँ जो पैदा होता है तो उसका वही कल्चर होता कोई है, कल्चर लेकिन होता सब है। लोग एक हैं इंसान। हाँ इंसान ही है, बस। क्योंकि वो तो देखिए जब पैदा होता है बच्चा या कुछ होता है उसमें लिखा हुआ नहीं होता। हाँ, बस तो ये एक इंसानियत है अब उनका सबसे बड़ा। कल्चर है, अब उनको जो तरबियत दी गई तो वो हम वो तो उनकी थोड़ी ना है करते। और हमारी अपनी हमारी है, अपनी है। उनकी अपनी जगह सही भाई है। हम तो सबसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि लोग देखिए 4 दिन की ज़िंदगी होती है, से आज लोग हैं कल नहीं है, सबको अच्छा, मर ऑटो में जाना घूम है। रहे थे, कैसा लग रहा था? हाँ ऑटो भी था खूबसूरत ज़्यादा। अब मैं वही तो मैंने से कह रही थी, अगर यहाँ का रिक्शा होता और ये उसमें जाके वीडियो बना रहे होते, वीडियो हमारी कैसी आती इनकी, रिक्शा टूटी फूटी रिक्शा, और वीडियो भी अजीब से आ रही होती। तो लेकिन बहुत अच्छा रिक्शा लगा, बिल्कुल न्यू और था। बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स थे इनके, बहुत ही हाँ। अच्छा, इंडिया की बहुत तारीफ कर रहे समोसे थे। खाए, समोसा इनको पसंद है। समोसा पसंद है, चाय पी, तो कॉफ़ी पी, ये सारी चीज़ें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।